me. And just in terms of the competitive nature of hip hop, drove me in. Like I heard a few friends on a school bus one day playing a song on their phone, and I had never even written in my life before, but I instantly told whoever was around me I can make a better rap song than them, and I wrote my first rap that day. And this was when I was like 12 years old. So like, what was it called? What was it called? Do you remember the name? Kuch naam? It was called Making G's. Making G's. Yeah. But I mean, for me, it was like that. From that moment, the pen on the first rap, I was like, this is what I want to do. And I don't know, I've just like never looked back. Like I used to tell people in school, like, oh, this summer I'm not coming back from school because I'm getting signed by Jay-Z. That's what I used to tell people like all the time. So it's like I think that competitive nature and that feeling inside that you're the best and you're growing to be the best, and you know, every rapper should feel that. So like that feeling, and you know, obviously rap has given us, you know, an opportunity to express ourselves, tell our story, be able to, like, you know, community, you know, everyone has their own thing. I'm talking too much. Altaf, you go for it, bro. You go for it. अरे नहीं। अच्छा अल्ताफ भाई, आपने कैसे स्टार्ट किया एंड आपको हिप हॉप के बारे में कैसे पता चला? सिंस इंडिया में तो उस टाइम उतना था नहीं जब आपने स्टार्ट किया था, इट वाज जस्ट स्लोली ग्रोइंग अप, तो आपको कैसे पता चला एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू? ब्रो मेरे को कैसे पता चला, जब भी हम लोग हुड में मतलब घूमते थे, तो मेरे हुड में ज्यादा डांस इन्फ्लुएंस बहुत था, बी बॉइंग एंड ये सब चीज का। तो मैंने देखा स्ट्रीट पे हम लोग के इधर मतलब डांसर लोग, बी बॉय लोग जैम करते रहते थे, तो बहुत सारा हिप हॉप म्यूजिक प्ले करके वो लोग जैम करते थे, जैसे नास, 50 सेंट, ऐसे अलग अलग। तो मेरे को बहुत कूल लगता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग ही ये करते थे, बी बॉइंग एंड ऑल, मेरे स्कूल में भी करते थे लड़के लोग। तो मेरे को बहुत सिक लगा, और हम लोग के टाइम पे मैं ब्लेस फील करता हूँ कि यूट्यूब आ गया था, तो हम लोग सब कुछ यूट्यूब से सर्च करके ब्रो मैंने चीजें देखी। मैंने 50 सेंट का फर्स्ट टाइम ब्रो एक रैप बैटल वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने देखा, जिसमें 50 सेंट के इन द क्लब पे सब लोग आके थ्रो डाउन दे रहे थे, बी बॉयज लोग। तो वो देख के रेड बुल BC1 का जो चैंपियनशिप, वो कुछ अलग ही वर्ल्ड चैंपियनशिप था, बहुत पुराना था वो। मतलब हर कंट्री से अलग अलग बी बॉय लोग आए थे, और बहुत बड़ा चैंपियनशिप था वो। पता नहीं कौन सा था, मेरे को उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो बहुत सिक था। और उधर से मेरे को पता चला कि 50 सेंट इन लोग के बारे में। और क्योंकि हम लोग मस्तीखोर थे और ऐसा चुल था हम लोग में चीजों का, तो मैंने सर्च किया। और जब मैंने एक्शन देखा वीडियो में, जैसे जो मस्ती विस्ती कर रहे 50 सेंट एंड ऑल, वो देख के मैंने फॉलो अप किया इस चीज को। और मेरे को सबसे ज्यादा ड्रेसिंग स्टाइल रैपर लोग का बहुत पसंद है। ऐसे करते करते मैं हिप हॉप के बारे में रिसर्च करते गया। फिर मेरे को फेसबुक से पता चला कि इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा सीन बढ़ रहा है, जैसे लोग कर रहे, डिवाइन वो टाइम पे कर रहा था, शाहरुल वो टाइम पे कर रहे थे सब लोग। तो तब मेरे को पता चला कि इंडिया में भी इतना सीन है। और वैसे भी हनी सिंह और बादशाह ये लोग सब तो तभी ड्रॉप ही कर रहे थे। फिर मेरे को लगा कि हाँ, मतलब इंडिया में भी है। फिर वो देख के मैं इंस्पायर हुआ, फिर हम लोग ने भी करना शुरू किया। नाइस। लेकिन अब जब आपने स्टार्ट कर लिया, हाउ डिड यू गेट साइंड टू गली गैंग? बिकॉज बहुत सारे अभी जो नए लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, उनको हमेशा मन में रहता है कि कोई प्राइमरी एक बंदा मिल जाए, कोई प्राइमरी लेवल मिल जाए, कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए। सो आप लोग कैसे साइन हुए गली गैंग में? व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक? जब मैं या यू गो अहेड ब्रो। No, go for it, bro. Go for it. या तो मैं जब भी गाना बना रहा था, तब मैंने से कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कोई लेबल को साइन होंगे या कभी कुछ ऐसा अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मेरे को बस ये था कि मैं सॉन्ग मेरा आउट करूँ, और जो अपना पोटेंशियल है वो लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोग भी रैप कर रहे हैं, हम लोग भी अपने हुड से अपने हुड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने ड्रॉप करते करते, मैं हर महीना मैं कुछ ना कुछ करके ड्रॉप करता था सॉन्ग। और ऐसे ही मैंने कोड मुंबई 17 ड्रॉप किया। और कोड मुंबई 17 थोड़ा ओल्ड स्कूल वाइब था ऐसा, तो डिवाइन और चैतन्य ने फर्स्ट टाइम सुना, उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, और ऐसे मेरे को डील ऑफर किया गली गैंग का। मेरे को वो टाइम पे मतलब मैं थोड़ा अपना अच्छा चल रहा था, लोग सुन रहे थे अपना म्यूजिक, तो मेरे को और भी लेबल से डील आया था। बट मेरे को गली गैंग एकदम सॉर्टेड लगा, क्योंकि डिवाइन भी एक आर्टिस्ट है, तो वो एक आर्टिस्ट का वाइब समझेगा कि कैसे। और हमेशा मेरे को हम भी गली से आके सब कुछ कर रहे हैं, और
इतना बड़ा सीन है, तो मेरे को लगा कि गली गैंग का जर्नी अगर ज्वाइन करेंगे तो सही में कुछ अच्छा हो सकता है और प्लान कुछ बड़े हो सकते हैं, और अभी किल कर रहे हैं हम लोग आज के डेट में। Nice. And what was your story like, Shahrukh? Which song got you So, signed, if ha, there was I a don't, particular? I don't think I don't think it was a specific song, but I met Divine in like 2015 when I just moved to Bombay. Just at hip hop nights, nights where DJ Proof used to play and DJ Shah, and it was just natural that we became friends through these hip hop nights for the love of hip hop, and we used to have we used to always send each other rap battle links and this and that. So it started as a friendship, and as his career got bigger, and he was able to one day say I'm going to start something where under an imprint of Gully Gang to help other artists. He Divine and Chaitanya approached me just after, I guess, a song of mine called Lax came out, and we started by joining them for gigs. We used to I used to open for gigs with the Proof. And slowly, it was the first project was the Gully Gang Cypher, the first one. So it was just like a an instant thing of Vivian telling me, I really resonate with what you're doing, and he knew me from the scene from Bombay, the way I was grinding in Bombay, and performing all the time and putting on music, and The Evil was also there. Avruti were like the new guys just coming up, but me and Devil had also collaborated quite a bit. So it was even Vivian and Devil's friendship goes back a long time. So I think it started from that friendship, and of course the respect for the music, for sure. That's nice. That's nice. Acha, also, since we have you both in the lineup, what was the thought behind वो जो अभी नया गाना निकला है? What was the thought behind keeping the features secret for the first 24 hours? You had नहीं है वो featuring question mark and question mark. What was the thought behind secret features? Yo, just want to make some waves. That's it. Make some waves. Like, you know what? I have so much respect for Altaf and Raftar. They're both incredible artists, and me and Altaf have so much music we've worked on, like sitting there, and the way I've seen him grown as well as an artist, as a songwriter, it's incredible. And when we wrote this song, this was 2 years ago when we wrote this song, so and it was supposed to come out last year, but then I think God has a way of getting it out at the right time, and things happen for a reason, and I think the way it came out now was perfect, because I wanted that experience of people reacting to the verses and the way it comes in, the same way I got goosebumps when I heard Altaf doing his verse and Raftar doing his verse. I wanted that same experience, and I'm super happy that our team at Gully Gang helped us execute that, and the whole video team. It is amazing. It is amazing. Anurag Sharma and his team. The way I told them, look, I want to reveal it in a way that people are getting goosebumps the whole time, and it's just showing part by part. And we had all our homies from Bombay, all the creative homies from Bombay really representing around us, which if you know Bombay, how we are, we meet each other every week out at Rasta or anywhere all over the city, and we all have love for each other, we all support each other. So we wanted to represent for that, and that we're all unique, and we all come together to to rep for what we do. Yeah, the song was kick-ass. All three verses had a flavor of their own. All three verses were kick-ass. And all the three artists in that song are somewhere or the other connected to Front Row, जिनके through आज हम बात कर रहे हैं. So, nice bit of coincidence there, yeah. And how does it feel like to be a part of that Front Row branding right there? Oh, Shahrukh got merch also. The water bottle, hydrated. So, Altaf bhai, आपका creative process क्या है? Like when you write a track, first of all, do you go beat first and then lyrics later, or do you write on metronome and then get the beat figured? And what do you, अगर आपको scratch से start करना है, तो theme कैसे सोचते हो गाने का? If you can take us through that.
ब्रो मेरे को म्यूजिक पे लिखना बहुत पसंद है, क्योंकि जितना मेरे को ऐसा लगता है कि म्यूजिक जितना अच्छा होगा तो उतना आर्टिस्ट अपने आप को भी पुश कर सकता है, और उतना आर्टिस्ट भी क्रिएटिवली फ्लोज में चेंजेस ला सकता है और अलग अलग चीज ट्राई कर सकता है। तो हमेशा मैं म्यूजिक पहले सुनता हूँ, और अगर जो म्यूजिक मेरे को मतलब फटाक से हिट करता है और उस पे फर्स्ट लाइन हमेशा मेरा, अगर फर्स्ट लाइन मेरे को प्रॉपर मिल जाता है तो फिर मैं लिखते 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 मेरे को वर्स मिल जाता है उसका। जैसे जब मैं सोच लिख रहा था तभी मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन लिखा था, कभी कभी बैठ के सोचूं किस पे लिखूं, और उसके बाद मेरे को सब कुछ मिल गया और मैं उसके बाद लिखते लिखते गया। तो हमेशा मेरा राइटिंग प्रोसेस एकदम मेरे लिए मतलब ऐसा लगता है कि जादू है ब्रो, मतलब गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं कर, मतलब मैं कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ कुछ भी गाने पे लिखने के लिए, ऐसा प्रेशर नहीं डालता हूँ कि अरे ब्रो आज तो लिखना ही पड़ेगा, मैंने एक हफ्ते से कुछ भी लिखा नहीं या मैंने कुछ लिखा नहीं। जब भी मेरा मूड होता है और जब मेरे मेरे दिल से मेरे को ऐसा लगता है कि लिखना चाहिए, तो तब मैं लिखना शुरू करता हूँ। और बहुत चीजें ब्रो मैं मतलब मेरा राइटिंग स्टाइल ज्यादा इस चीज के ऊपर है कि जो चीज मैं नोटिस करता हूँ वो चीज पे मेरा राइटिंग स्टाइल है। अगर मैं बाहर स्ट्रीट पे कुछ नोटिस कर रहा हूँ तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ, जो मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया उसके बारे में मैं लिखता हूँ। और ज्यादा और अगर मेरे कोई दिमाग में अच्छा टॉपिक या कंटेंट आ जाए तो उसके बारे में मैं लिखता हूँ। तो हमेशा राइटिंग प्रोसेस तो यही रहा है ब्रो। And Sharul, what about you? Well You said. have beat making process and then writing process. How do you go about it? Do you prefer using a lot of samples? Do Yeah. you want to make beats from scratch? And how do you go about writing hooks? There are a lot of things that you have to cover here. But yeah. Yeah. No, like for me, it's the same. It could be. I love what Altaf said, because it is definitely that first line. Once that first line comes, it's just like it's like a waterfall of of lyrics. And for me, it has to come from a real place. Obviously we work on brand stuff, where there's a brief, but like when it comes from your life, you need to speak from experience. Like for me, even when I just wrote my 64 bars, for Red Bull. Yeah. For me, that song, I had the worst writer's block that week, the worst writer's block. And for me, I was dealing with the fact that dealing with social media, anxiety, dealing with work, dealing with family stuff, personal stuff, and that's exactly what I channeled into, as someone who's always trying to, on social media, you got to show that, you're always trying, you're always grinding. So that kind of sarcasm I put into there, that like, get your game face on, start winning, start pushing yourself. And that kind of triggered inside, for me. So I feel For you have to example, be, but all that stuff. I want to talk about everything. So I think you have to honestly give, from where you're coming from. I can't speak on how other people, are. So naturally, whatever is in my, in my experience, in my brain, is gonna come out in that way. So I mean, I don't think in terms of music, every piece of art is different. So you have to kind of aim for it and give your best, and that becomes your art at the end of the day. So for me, even when it comes to a hook, it's honestly channeling some sort of melody through God. And sometimes maybe there's a melody from Michael Jackson comes, and some comes from Stevie Wonder, and and you have to make it your own, because I grew up listening, nothing is original in this world. I don't think anything is original in this world. It's how you make it yours. It's how you improve on things. Hip hop is not ours. It comes from the US and from New York. It's originated from there. We respect it so much, but we're doing it in our own way. So even with hooks, right? I mentioned 50 Cent. There's so many more guys when it comes to hooks I respect. Nate Dogg, rest in peace to Nate Dogg. I know a lot of people try and compare me, and it's a great comparison. But for hooks, it's just me trying to. I'm the worst singer in the world, honestly. I don't think I have a great. I don't think I have a great tone in terms of I can sing like crazy. But for me, when it comes to melody, I love melodies so much. Do you think you have a better taste in melodies because you are known as the, let's say, hook king, or whatever people call you, but something around. I know how to make shit sound good. That's what I know.
I know how to make shit sound good. Not coming from a cocky place, but like I spend too much time sitting in front of my mic, way too much time sitting in front of my mic, and everyone on front row, you know, who I've taught specifically, you can learn from everyone. You can go listen to great music, but if you don't put in the work and you don't try and you don't go and experiment as much as you can, and I've seen Altaf experiment and always in the studio, always. So you have to go and try. 100 bro. Every person we respect in this game, person we respect in this game has been locked up in the studio trying and trying and trying and trying. You know, so it all comes from that, and 100% we're blessed with talent. Big up for that. Thank God and our parents for that. For real. Nice. अल्ताफ भाई, तो अगर if when you are let's say dealing with a beat like जो आपको बंसी में मिला था, what is your prime focus कि आपको बीट के साथ जैसे मतलब आपका फ्लो फर्स्ट फोकस रहता है कि आपका फ्लो बीट के साथ कैसे साउंड करना चाहिए, या आप क्या बोल रहे हो उस फ्लो में वो फर्स्ट फोकस रहता है? तो फर्स्ट वेरी फर्स्ट फोकस व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रैक, जब आप बीट सुनते हो लेट्स से। ब्रो मैं जब भी बीच पे लिखता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जब रैप करूँ उस पर या फ्लो करूँ तो मैं मोस्टली उस पर ट्राई करता हूँ कि बीट को ज्यादा मैं कॉम्प्लीमेंट करूँ, मतलब क्योंकि मतलब अगर कोई अपन वर्स लिखने जा रहे तो सिर्फ वर्स 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 या सिर्फ लाइन लाइन बास 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 लिख के वैसा भी स्टाइल होता है, लेकिन कभी कभी जैसे बंसी ऐसा बीट है, वो बहुत बीट ही खुद में इतना फनी और बैंगर है कि इसको मतलब ज्यादा मैं चाहता था कि कॉम्प्लीमेंट करूँ, तो उसके लिए मैंने बार्स थोड़ा कम रखा और मतलब उस पे मतलब जैसे लाइंस बहुत कम रखे उस पे, और हुक में भी मतलब मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हुक पे मैं आके सिर्फ बंसी है बस्ती में बोल रहा हूँ, बाकी तो जो काम करने का बीट ही कर रही है। तो कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ तुम लिख लिख के भर मत दो बीट को, कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं कि बीट को भी अपना स्पेस दो, उसके हर एक एलिमेंट को प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट करो कि जब वो ड्रॉप हो रहा है उसके बाद अगर तुम कुछ वर्ड बोल रहे हो तो अच्छा साउंड करे। तो हमेशा अपने को बीट को भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जब मैं बंसी लिख रहा था तभी मैंने सुना लैम्बो ड्राइव और अपना करण कंचन, हम लोग सब ने बाजे वाला, हम लोग तीनों ने मिलके म्यूजिक पे काम किया और तीनों ने अपना अपना एलिमेंट और स्टाइल दिया उसमें। तो मैंने देखा कि ये 50 सेंट वाइब है, क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर हूँ 50 सेंट से और वो थोड़ा ओल्ड स्कूल भी था। तो तब जाके मैंने बंसी पे थोड़ा मतलब ऐसा फन टाइप ऑफ स्टाइल मेरा उसमें मैंने डाला, और उसमें ही मैंने वही किया कि बीट को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किया, और गाना अभी सिक साउंड कर रहा है, लोग उस पर वाइब कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। और मैंने म्यूजिक वीडियो में भी सोचा कि फन दिखाएंगे थोड़ा, और हम लोगों ने म्यूजिक वीडियो भी वैसा बनाया, तो लोगों को मजा आ रहा है ब्रो देख के। फॉर श्योर गाना तो बहुत सॉलिड है, एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली मैंने एक सवाल भी इसी वजह से पूछा था, बिकॉज दैट सॉन्ग एक्चुअली कैप्चर्स द वाइब, और बीट और वर्ड में मतलब कुछ जारिंग डिफरेंस नहीं है, इट्स अ कोहेसिव यूनिट की तरह काम करता है, इसीलिए एक्चुअली मैंने स्पेसिफिकली बंसी के बारे में पूछा था। बट या मूविंग ऑन, अगर हम थोड़ी फ्रंट रो की कोलैबोरेशन के बारे में बात करें तो हाउ डिड फ्रंट रो का कोलैबोरेशन स्टार्ट एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन द प्लेटफॉर्म? I think for us, the first experience with Front Row was all together with Gully Gang. We did a pre-recorded course, and you know we covered all aspects. You know, in terms of researching and coming up with the course, it was a good a month at least. You know, we were coming up with things, and I think from all of us, more than anything, you know. Little experiences you come up with when you're coming up, like for example, when you're nobody and you're performing for the first time in a club, how you go sound check, how you come prepared to a club, how many sets of USBs you bring in your pocket with your songs. These little things, I feel like all of us had something to say, you know, in terms of that, because certain lessons and stuff you can learn off listening to good music, learn from that, but like these little things that you come along your journey, which experience teaches you, I feel like we all, you know, had some sort of proper story to give the listeners, and you know, it was really interesting to hear everyone's, you know, perspective on everything. And I feel like in terms of how it was, you know, shot and delivered, it was great. It was a lot of fun, you know, to be all together, and you know, kind of like we're all like talking about our own experiences. Like it's the first time you're reflecting, you know, we're really reflecting on everything we've gone through to, you know, and first time even I started speaking about, oh wow, that's how I write, that's how I think. You don't even think sometimes. We just start writing or we start performing or whatever, and then when you start dissecting it and thinking about it, it's like, damn, there is a process.
there is, you know, this level of, you know, organization that we have in our brains, you know. Very nice. Altaf bhai, I'll direct the next question to you. बहुत सारे लोग अभी आपसे इंस्पायर्ड हैं, they look up to you, है ना? तो there must be some shortcoming, कि कुछ नेगेटिव भी होता होगा कि आप कुछ नेगेटिव कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो कोई इन्फ्लुएंस ना हो तो वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, कुछ फायदे भी होंगे. कैन यू टेक अस थ्रू कि जब बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है आपके पास, तो what are some things that you find negative and what are some positive aspects of it? अगर ब्रो जब अपने फैंस बन जाते हैं और बहुत सारे लिसनर लोग आपका म्यूजिक सीरियसली लेने लग जाते हैं, तो आप पे भी एक जिम्मेदारी रहती है कि आपके जितने भी ऑडियंस है उनको आप कैसा चीज फीड कर रहे हो. तो मैं इस चीज में बहुत ध्यान रखता हूँ ब्रो, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरी ऑडियंस जितनी भी है जो सही में अपना म्यूजिक सुनते हैं और सही में अपने म्यूजिक को सीरियसली लेते हैं, उनको मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ अच्छा ही फीड करूँ ब्रो. उसके लिए मेरे म्यूजिक में हमेशा मतलब मैं भी फन चीजें बोलता हूँ, फन थिंग्स करता हूँ ब्रो, लेकिन मैं पूरा चीज का ध्यान रखता हूँ क्योंकि बच्चे लोग अपना म्यूजिक सुनते हैं और हर टाइप का ऑडियंस अपना म्यूजिक सुनता है ब्रो. तो अभी मैं ब्लेस फील करता हूँ. अभी मेरा मतलब अपना ऑडियंस एकदम भी बड़ा नहीं है या एकदम छोटा भी नहीं है ब्रो. जो भी ऑडियंस है उसमें सब लोग आते हैं ब्रो, आंटी अंकल आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं. तो हम लोग उसमें ये ट्राई कर रहे हैं कि जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करते रहे और अच्छा कंटेंट डालते रहे. मैं कभी ऐसा सोचता नहीं हूँ ब्रो कि सॉन्ग हमेशा, मैं जब भी सॉन्ग मेकिंग प्रोसेस में आता है हमेशा मैं पॉजिटिवली लिखता हूँ ब्रो हर गाने, और हमेशा पॉजिटिव सोच के लिखता हूँ. नेगेटिव भी लोग अगर बोलते हैं कि अरे ये आपको ये बोल रहा है, आपको इसको डिस करना चाहिए, ये वो, डिस भी एक पार्ट है ब्रो, अच्छा है, लेकिन अपन डिस भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे. लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है. फिलहाल मेरे को लगता है कि बहुत सारा लव है ब्रो. जब मैं एक भी सॉन्ग ड्रॉप करता हूँ तो मैं मेरा कमेंट सेक्शन देखता हूँ ब्रो, पब्लिक सिर्फ प्यार देती है मेरे को, सिर्फ प्यार, हेट उसमें से बहुत कम होता है. तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि वैसा ही चीज मैं करते रहो ब्रो कंटिन्यू, और लोगों का ऐसी प्यार इकट्ठा करके जमा करते रहो ब्रो. बहुत सही पॉइंट था वो वाला कि अरे आप क्या कर रहे हो भाई, आपको डिस्कस, दैट्स द होल लाइक ऑडियंस रिक्वायरमेंट कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप इसको गाली दे रहे हो ना, लाइक दैट. अच्छा शाहरुख, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? लाइक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द negatives and the positives of being popular or being an inspiration to someone? I think you have a responsibility, of course. You know, everything you say reflects all your listeners, and there's not everyone is going to agree with what you say all the time, for sure. And I feel like, of course, you know, there are days that you want to, of course we are positive with our music, but then sometimes I want to make a song about a breakup or something, you know, bad, or you know, because it's art, it's true, you know. If you're not speaking the truth, which we all go through, we're going through as much downs as ups, you know, which is why I made something like Hook, because we focus so much, Instagram and all these social media highlights just the highs, but it never showcases the lows, you know. For me, it's important that you know, we showcase every part of it and we learn from it, because we're all going through similar things, but we're all different in our little ways, but we're all humans at the end of the day, so we can learn from each other. And in terms of the responsibilities we have, it's important, but at the same time, being popular doesn't mean you're like Superman and you're a politician or whatever like that, because we're all human at the end of the day. And 100%. I feel like a lot of way more famous people get like harrowed and stuff, and like certain people who should not be like dictating how the world works or whatever, who are just entertainers, you know, people put them too high on a pedestal that if they make one little mistake, they're cancelled. And I hate that word, and I hate that whole cancel culture, because like it's just are we not allowed to make mistakes in life? Are we not allowed to, you know, move on and get better? The sad part is every artist, any good artist or anyone good in their own field, लोग उनसे expect करते हैं कि अगर एक चीज में अच्छा है तो बाकी 10 चीज में भी उतना ही अच्छा होगा. So yeah, that is actually a sad part. But before we take leave, I have a quick rapid fire. मैं एक सवाल पूछूंगा and quickly MC अल्ताफ भाई आप पहले जवाब दोगे and शाहरुख भाई will follow follow with your answer. ठीक है? Question number 1, your favorite hip hop artist of all time?
Kanye West. What? Kanye West. Nas, bro, Nas. Nas. Okay. What's your favorite bar from a hip hop track? From any hip hop track? Oh, One bar that you can recall. अपना भी हो सकता है actually. One bar that you absolutely love. I'm gonna say There's a lot of bars. but the one I just said is big boy trying to entertain in the game full of actors. I'm just unmade doing a roast. Case closed, don't cancel my appetite. I'm just trying to raise the stakes. That's it. और मेरा फेवरेट है ब्रो, ऐसा बहुत बार से मैं ये क्वेश्चन में जवाब ही नहीं दे सकता. चलो ठीक है. Who is your role model in life? Hip hop की जरूरत नहीं, just in your life. It could be hip hop, could be a non hip hop personality. Who's your role model? Altaf bhai. You go, Shah, first. Good question. I think for many different things, I feel like for music, creativity, and what an artist can do, I think Kanye is definitely a role model for me, like from a distance. And I feel like even in terms of like directly like around us, I feel like there's so many people who paved the way for us within music, like Divine, like Raftar, so many other people like that we look up to, because they have really the first ones who go through it get the most the most I don't know what the right word to say, but like Obstacles. they kind of they face the most obstacles. I feel like Divine really put on for this city, and the way a lot of artists before us have kind of paved the way of how to do things in this country. They're role models in indirect and from far we can learn. But and I think my parents just in terms of how to go about life, how to navigate through everything. You gotta learn from your family and your loved ones. That's it. It's really nice कि हम कुछ देर पहले उसके बात कर रहे थे कि if you look up to an artist, he doesn't have to be perfect in some other things, and we have followed up with this answer where Shahrul ने Kanye West का नाम लिया and बोला at least from far I can see that I'm inspired. I noticed that. Correct. अल्ताफ भाई, आपके रोल मॉडल्स कौन हैं? ब्रो मेरे लिए भी नाज का म्यूजिक बहुत मैं सुनता था ब्रो, जब भी हम लोग सीख रहे थे, और